So, as you all know after seeing the thumbnail that what we are going to see today. Yep, today we're going to see short stories. Isn't the short stories of your prism, but it is one of the portion in your English language paper book. Okay, and this is you will find this short story in the test paper. Let me check over here where we will find the short stories. Yeah, in the unit 13, the B portion. Okay, the portion B, you will find over there short stories. Okay, in unit 3, like unit 13 and the portion B. Okay, let it write over here, unit 13 portion B. Okay, so here you will find short story portion. Now, is it important, means is it really crucial, will it come in examination? I haven't seen. Actually, I didn't see this portion in your English language paper. Why? Because you already have a separate book of your short story, that is Prism. Okay, that is Prism in your class 11th. So there's no need to study the short story. Well, this is not a very hard thing as well. You all are doing short story from your lower grades. Okay, so you all are aware about short story. Okay, so why I'm making this video? To make aware that what kinds of stories are there, what are the types of the stories. Okay, what are the types of the stories? To make you aware about this, I have made you like this thing. Okay, now let's see. Here you can see a short story, right? I've just pasted over here so that this page can look more attractive and more relevant to the topic. Okay, as I told you, this is the topic of your grammar, English grammar, which is not very important. If you're thinking that you're well versed with this topic, do not watch this video. I'm just making you for your awareness. Okay, like we have discussed many crucial things. Okay, so something it should be light as well. Okay, कुछ लाइट चीज़ भी होनी चाहिए जिससे कि आपका माइंड फ्रेश रहे, है ना. हर वक्त वो टफ चीज़ें लाइक जो प्रपोजल राइटिंग और हर वक्त जो प्रिपोजिशंस हैं, एडजेक्टिव्स एंड दीज व्हाट नॉट, आई पोस्टेड टू यू. ओके, टेंसेस इन 2 hours. ओके, सो इतनी सारी एग्जॉस्टिव चीज़ों को देखने के बाद कुछ अच्छी चीज़ आपको ज़रूर देखनी चाहिए, विच इज़ दिस शॉर्ट स्टोरी. ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, शॉर्ट स्टोरी, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. Now, if you get time, please read this story as well. This is also very important, very interesting. Sorry, not important, very interesting. Okay, if you get time, please read this story as well. Okay, well, let's move on and let's see about short story. So, what do you think? What is a short story? What is a story? नानी की कहानियाँ, है ना. तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग कहानियाँ, सिर्फ और सिर्फ कहानियाँ देखने वाले हैं. बिल्कुल मज़े से इस टॉपिक को देखेंगे और ख़त्म करेंगे इस टॉपिक को भी एक बार में. ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज़ शॉर्ट स्टोरी. Well, it is most frequently practiced and widely read form of literature. Okay, it is the most widely practiced and widely read form of literature. All right, and in the world today, okay, it is the one of the most widely read topic in the literature. Okay, and there's a practically no subject, no human situation that has not been at some time the subject of a story. Given ahead are the different types of stories. Well, we do not read stories because we have to learn some format or what. No, whatever comes in our mind, we write over there. Okay, we express our thoughts like composition. This is also a very important topic and very not important but very interesting topic. Okay, where you feel light. Okay, so I have analyzed past 10 years question paper. Within those past 10 years question papers of English of class 12th, only 2 question papers you will see that their short story has been asked. Means this topic is not very famous topic. Okay, you will not see the questions from there.
Well, let's see what are the different forms of stories. So the first one is adventures. Okay, adventure. What do you mean by adventure? Okay, adventure means something very like fatal, something very dangerous. Okay, so in this type of story, these are the types of story. Make sure you remember this point. These are the types of stories. Okay, so the first one is adventures, and in this type of story, some central character usually goes through unusual and dangerous adventures, often in search of hidden wealth or to achieve something. Well, adventure means you here this main like character of the story. Okay, he go to search any treasure, okay, or any like any wealth or any very crucial thing. Like we have seen many things of dinosaur मूवी वी हैव सीन. ओके, वो जो डायनासोर वाली मूवी है, क्या नाम है उसका, आई डोंट नो, बट उसमें हमने देखा है कि वो लोग जाते हैं एडवेंचर पर, है ना. एंड दे यू विल सी लॉट ऑफ लाइक वहाँ पे जो वो होते हैं, ओके, व्हाट डू वी कॉल दैट थिंग, आइसलैंड्स. ओके, सो वो जो आइसलैंड्स होते हैं उन पे भी यू विल सी दे यूज्ड टू गो एंड ही यूज्ड टू सर्च द वेल्थ. ओके, और वहाँ पे हमें कोई जानवर मिल जाता है. तो ये सारी क्या है, एडवेंचरस वाली स्टोरीज है, जिसमें कि एक सेंट्रल पार्ट जो होता है, सेंट्रल कैरेक्टर मीन्स जो मेन पर्सन होता है स्टोरी का, वो जाता है कोई भी खजाने को, कोई भी ट्रेजर को लाइक ढूंढने के लिए. ओके, सो ये होता है हमारा एडवेंचरस वाली स्टोरीज हो गई, है ना. और इसकी हमने कई सारी मूवीज़ भी देखी हैं. वेल, नेक्स्ट हम देखते हैं हॉरर स्टोरीज़ भी होती हैं, लाइक कुछ स्पूकी स्टोरीज़ भी होती हैं, जिसमें हमें देखते हैं कि मॉन्स्टर आ गया, या जिसमें हम देखते हैं कुछ सुपर नेचुरल एलिमेंट्स को हम शो कर रहे हैं, कुछ सुपर नेचुरल प्ले को हम शो कर रहे हैं, प्लेस को हम शो कर रहे हैं, कोई बिल्डिंग हो गई. ओके, स्पेशली इसमें कैसल्स होते हैं, where strange and frightening happens occur, where these types of strange and spooky and creepy things occur. ओके, कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है ऐसी जगहों पर, है ना. तो वो हमारी किस में आती है, हॉरर टाइप्स ऑफ स्टोरीज़ में. जैसे कि हमने हॉरर टाइप्स ऑफ स्टोरीज पढ़ी हुई हैं ट्रेजर ट्रोप में, है ना. 10th क्लास की ट्रेजर ट्रोप में वी हैव सीन अ फेस इन द डार्क बाय रस्किन बॉन्ड. Okay, so in that story we have already illustrated this example, we have already seen this example, like in our treasure trove of class 10th, A Face in the Dark. Okay, उसमें हमने क्या देखा कि जो टीचर होते हैं मिस्टर ऑलिवर, ओके, वो फॉरेस्ट में जाते हैं, वहाँ उन्हें क्या मिलता है, एक बॉय मिलता है विदाउट हेड, विदाउट फेस, ओके, विदाउट एनी फेशियल फीचर, है ना. तो वहाँ पे क्या जो रस्किन बॉन्ड है वो क्या करना चाह रहे हैं, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स को एनहेंस करना चाह रहे हैं. अभी हम जो प्ले पढ़ रहे हैं अपना मैकबेथ, इसमें हमने पढ़ा हुआ है जो विचेस हैं, 3 वियर सिस्टर्स, वो क्या कर रही हैं, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स हैं, और वो क्या कर रही हैं, स्पूकीनेस थोड़ी सी बिखेर रही हैं, दे आर स्प्रिंकलिंग द स्पूकीनेस इन द प्ले. ओके, तो ये जो हॉरर स्टोरीज होती हैं, ये स्पेशली कोई कैसल हो गया, जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है, हीथ हो जाती है मैकबेथ में, देखें तो दिस इज़ अ हीथ. ओके, कोई स्ट्रेंज और फ्राइटनिंग हैपनिंग होती, कोई स्ट्रेंज बात हो जाती है. ओके, तो ये सारी चीज़ें वी हैव ऑलरेडी सीन. ओके, इफ वी टॉक अबाउट क्राइम एंड डिटेक्शन मीन्स द डिटेक्टिव स्टोरीज इज अबाउट मर्डर और थेफ्ट. Okay, early in the story a crime is committed and the rest of the story is concerned with solving the mystery of the crime. These types of plots are popular with readers. Okay, अब हमने क्राइम एंड डिटेक्शन के बारे में भी हमने कई सारी स्टोरीज देखी हैं कि कोई भी बहुत बड़ा किलर हो, या कोई भी मर्डरर, या कोई भी बहुत बड़ा क्रिमिनल होता है. ओके, तो पहले तो पूरी स्टोरी में मतलब वो उसे ढूंढते रहते हैं, उसके बारे में ट्रिक्स, उसे पकड़ने के लिए उसके बारे में ट्रिक्स देखते हैं, उसे कैसे पकड़ा जाए, ये पूरी स्टोरीज ऐसे निकल जाती हैं, और लास्ट में वो जो क्रिमिनल होता है वो पकड़ा जाता है ना. और कभी कभी तो वो पकड़ा भी नहीं जाता, तो वो जो स्टोरी हो जाती है वो कहाँ हो जाती है, सस्पेंस में आ जाती है. ठीक, तो इस तरीके की स्टोरीज भी कई सारी होती हैं. ओके, जैसे कि हमने पढ़ी हुई है अली बाबा एंड द 40 थीव्स. ओके, we have seen in our lower grades, or else you have seen the movie or cartoon of it. Okay, Ali Baba and 40 Thieves. ओके, तो उसमें हमने क्या देखा है कि अली बाबा जो होता है एक थीव होता है, बहुत ही पुअर थीव होते हैं. ओके, जिन्हें पकड़ने के लिए लोग
पूरा स्टोरी में वो उन्हें पकड़ते ही रहते हैं और लास्ट में वो पकड़ में आ भी जाते हैं, है ना। तो इस तरीके के हमने देखे हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं मिस्ट्री के बारे में। मिस्ट्री, व्हाट डू यू मीन बाय मिस्ट्री? कोई भी ऐसी चीज़ जिससे स्टोरी के सबसे लास्ट में सॉल्व किया जा रहा है, कोई भी ऐसी पजल जिस स्टोरी के सबसे लास्ट में सॉल्व किया जाता है। अगर आपने एक मूवी देखी होगी तो द नेम ऑफ दैट मूवी इज़ रेड डोर। ओके, रेड डोर एक पजल मूवी है जिसमें वो जो लोग होते हैं वो पूरे मूवी में सिर्फ पजल को ही सॉल्व करते रहते हैं और एट द लास्ट दे क्रॉस द रेड डोर। माना जाता है उस रेड डोर में कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ रहती हैं। तो इस तरीके से जो मिस्ट्रीज़ होती हैं, मिस्ट्री टाइप्स ऑफ शॉर्ट स्टोरीज होती हैं। सो इनमें इसमें जो सेंटर्ड होता है, इसमें जो मेन पार्ट होता है वो किसमें होता है? किसी भी मिस्ट्री को सॉल्व करना, किसी भी स्ट्रेंज मिस्ट्री को सॉल्व करना, और वो लास्ट में सॉल्व हो भी जाती हैं, है ना। तो दिस इज़ ऑल अबाउट मिस्ट्री एंड लेट्स टॉक अबाउट स्पाई एंड एस्पिनोज। ओके, एस्पिनोज, spy and espionage. What do you mean by spy? Spy means in Hindi we used to say na jasoos. So that, okay. So in this type of story, there is a secret agent. कोई भी secret agent होता है, कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो मतलब जो सारी न्यूज़ मतलब सारी न्यूज़ कैसे देती है, इनेमी पार्ट को दे देती है ना। तो बहुत सारी चीज़ें टाइप्स की स्टोरीज़ में दिखाई जाती हैं। लाइक दिस टाइप ऑफ स्टोरीज अबाउट सीक्रेट एजेंट्स, espionage and all the mystery and danger that go with them. Perhaps the best known of all the modern spy stories are centered around James Bond, the secret agent. This is the name of a short story by James Bond. Okay, so it is one of the best spy movie. Okay, like short story. इसमें क्या होता है, मतलब इन टाइप्स की शॉर्ट स्टोरीज में क्या होता है, कोई भी ऐसी मतलब एक कोई ऐसा पर्सन होता है जो कि हमारे सारे सीक्रेट्स को अपने पास रखता है और वो दूसरे हमारे जो जो हमारे अपोजिशन पार्टनर्स होते हैं उन्हें बताता है। मीन्स हमारे जो विरुद्ध करने वाले लोग होते हैं उन्हें वो सारी न्यूज़ देता है। तो ये सब होता है हमारे स्पाई एंड एस्पियोनेज में। ओके, तो okay, now let's come to the sixth type, that is humorous types of stories means something very funny in the story, है ना। कोई स्टोरीज ऐसी होती हैं जिसमें बहुत फनी थिंग्स होती हैं, है ना। तो in this type of stories humor plays a major role. The main objective is to entertain people. A popular writer of humorous story in English is P.G. Wodehouse. Okay, so he is the he is the best writer for the humorous types of stories, for the funny types of stories. Okay, P.G. Wodehouse. ओके, Wodehouse. सो इन टाइप्स की स्टोरीज़ में क्या होता है, इन टाइप्स की स्टोरीज़ में कोई बहुत ज़्यादा फ़नी सीन दिखाती जाता है, बहुत फ़नी कैरेक्टर्स आइदर होंगे या बहुत ही फ़नी थिंग्स होंगी इसमें। जैसे कि हम एग्जाम्पल लें मिस्टर बीन, है ना, वो स्टोरी या कार्टून ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, है ना। तो अगर आप वो देखेंगे दैट इज़ क्वाइट फ़नी, है ना। एक पहले बहुत पहले वो आता था सीरियल विच नेम वॉज शाकालाका बूम बूम। आई होप यू हैव हर्ड अबाउट इट। ओके, सो दैट वॉज द very great example of humorous types of stories. Okay, so this is humorous. Next, seventh is satirical stories usually make fun of human feelings, political and religion organizations, habits and social customs, rich and poor, or the powerful and the weak. Satirical means किसी की हंसी बनाना. Okay, something very like very happy, very funny. Okay, something very ridiculous. Okay, so satirical और ridiculous दो नेम होते हैं टाइप्स की स्टोरीज़ की। ओके, इनमें कुछ भी this is usually have the fun of human feelings, means human की किसी भी फीलिंग का फन मजाक बनाना। ओके, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, हैबिट्स एंड सोशल कस्टम्स को
मतलब उनका मजाक बनाना. एंड रिच एंड पुअर और द पावरफुल एंड द वीक, इन लोगों के बीच में मजाक बनाना. मीन्स अगर एक रिच है और दूसरा पुअर है तो दोनों के बीच में मजाक होना, है ना. सो ये सारी हमारे होते हैं स्टेरिकल टाइप्स ऑफ स्टोरीज, जिसमें जो लाइक जिसमें लोगों की मतलब हंसी बनती है. ओके. एंड नेक्स्ट 8th वन इज रोमांस. It is in this type of stories mainly about the course of love between two men, between a man and a woman. Its ups and downs, and usually its final triumph in united the two lovers. Okay, means पहले तो there are two couples who are fell in love. After that, they got like furious, they got quarrel with each other. Okay, and at the last of the story they met again. So these types of stories where love takes place, okay, that is known as romance types of short stories. Okay, next is science fiction, very important. Tell me one example where we have read a science fiction story. Okay, well, just ponder for a while, okay, and just tell me. So it is a product of the great scientific and technological advances that have been made in modern times. Man's imagination has leapt ahead and sees future developments. Okay, science fiction means a story about technology of science, a story about modernization of the science, a story about the future prediction. Well, there was a story where a person can live on the moon, okay, when there were no life on moon. So there was a story written by a poet, Horsgen Born. Okay, he was the poet. He has written a story, a life on the moon. The name was A Life on the Moon. It was very old story, okay, where he is told that there is a life on the moon. And one short story we have already discussed in our 10th board class. Okay, that is, just ponder for a while. Have you guessed? Well, I think so. It was All Summer in a Day. Why? Ray Douglas Bradbury. Okay, so here the girl, the name of that girl was Margot. Okay, she has came from the earth to the Mars. Okay, yeah, there was Mars, or so on that planet she has come. So this was all the story. If you want to listen the story, please go on my channel and see the story. Okay, now this was the last one. Let's see a few example of the short stories. Okay, humanity. What do you mean by humanity? What happened to this? Okay, let's see what do you mean by humanity. Humanity means the feeling of sympathy in a human, the feeling of empathy in a human. That is known as humanity. So let's read the story. It is our story time, so let's read the story. Well, father and son went to a temple. Seeing the pillars of lions at the entrance of the temple, suddenly the son raised a hug and cried, "Run, father, otherwise those lions will eat us." Okay, dad consoled her, saying, "They're only idols, will not harm us." Okay, so here father and son, they both visit temple. कहाँ जाते हैं वो? Temple, मंदिर में जाते हैं. Now उनका जो son है, he is quite small, he is a child just, तो वो डर जाता है, he frightened, and he said to his father that, "Father, those lion, okay, which is on the temple, they will eat us, please run before they attack on us," है ना. तो those are idols, but the child is thinking, he is pondering that the idols, they are the real lions. Okay, then his father, he mocked on him, okay, and says that, "Child, this is not a lion, this is just an idol." Okay, क्या है ये? सिर्फ आइडल है, ये हमें परेशान नहीं करेंगी. Then the son replied. अब son बहुत ही अच्छी तरीके से रिप्लाई करता है.
फादर ने कहा कि बेटा ये जो है ये सिर्फ एक मूर्तियाँ हैं, दे विल नॉट हार्म अस, ये हमें परेशान नहीं करेंगी, ये हमसे कुछ नहीं कहेंगी. देन सन रिप्लाई, अब जो सन है ही रिप्लाई, ही सेड, if those loin idols will not harm us, then how can the idols of the God bless us? Now he said that अगर ये जो लॉइन है ये एक मूर्ति है और ये हमें परेशान नहीं करेंगे क्योंकि इनमें जान नहीं है, तो एक मूर्ति हमारी मदद कैसे कर सकती है, एक भगवान की मूर्ति हमें कैसे ब्लेस कर सकती है. Papa wrote in the diary, he wrote in the diary that what my son has said to me. Okay, then I'm still speechless over my child's answer, and I have started looking for God in humans instead of idols. I did not find God, but I found humanity. Means, rather than worshipping idols, rather than giving them gifts, rather than giving them the sacred food or something like this, give the food and give the clothes, give the attires and give all the thing to a human, because there is no use to worship an idol. And this is the same called by Raja Ram Mohan Roy. If you read in history, there he has said that don't worship like idols. Believe in God, who is in your heart, and start worshipping your own fellow man, your own like humans. तो क्या कहते हैं कि I didn't worship I didn't give any gift, something like fruits and all the things to an idol. Rather than I giving them, I gave to the poor children and the people. So this is what we call as humanity. All right. Next story: a farmer and his lazy son. This is one more story. Okay, though they are very small, but you have to write little lengthy story if the question comes. Okay, so a father and his lazy son. So once there lived a farmer. He had 4 sons. They were all very lazy and did nothing. Means एक बार की बात है, फार्मर और 4 सन, मतलब एक फार्मर जो है, किसान जो वो अपने 4 बेटों के साथ रहता था, वो चारों बहुत ही लेथार्जिक थे. दे आर वेरी लेजी, दे आर वेरी लेथार्जिक. ओके, एंड ही एडवाइज्ड देम टू डू द वर्क बट डिड नॉट केयर. In the end, the farmer fell seriously ill. He summoned all his sons and told them about the treasure lying somewhere in the field. Okay, और एक दिन जो उसके पिता हैं, उन चारों भाइयों के पिता हैं, वो क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं. ओके, और उन लोगों ने चारों सन्स को समन से इकट्ठा करना. ओके, दे कॉल ऑल द 4 सन्स. ओके, चारों बेटों को बुलाया और बताया कि फील्ड में कहीं ना कहीं ट्रेजर मीन्स खजाना छुपा हुआ है. ओके, ट्रेजर मीन्स खजाना छुपा हुआ है. ओके, द सन्स आस्क्ड हर टू मार्क द प्लेस, बट बिफोर सेइंग एनीथिंग ही डाइड. बिना कुछ कहीं वो मर जाते हैं. ठीक है, he didn't do anything. They start dying of hunger. Soon he remembered the treasure his father has left him. They dug deep in the field, but no treasure was found. The soil was enriched by doing this. At last he sowed the land. After a few days there was a bumper crop. Then he came to know about the intelligence of his father. He worked hard and got rich. So what they did, they have plowed all the field. Okay, because they were wondering there will be a treasure. Okay, treasure. So they didn't find treasure anywhere, but since they plowed the field, so it makes the soil more fertile. After ploughing the field, the soil was more fertile and more enriched with the nutrients. Okay, now they think, well, we have ploughed the file of all the field. Let's sow some seeds over there. So they have sowed some seeds on that plowed area, on that plowed field. So after some time, they got the very good and a very healthy crop. Okay, and due to their father intelligence, one day they got rich. So what is the moral of the story? Well done, means well done. Means if you do good, you'll find good.
Okay, so this was the last story. So with this we come to an end, and that's it. And this is was the very important, very like, why I'm saying important, this is not important, this is a very simple topic, but in your like in your total English, that's why I complete this topic. Okay, so that's it. Bye bye, and I hope you are well aware of short stories. Okay, so that's it. Bye bye, stay tuned for more videos. Bye guys. If you love this video, please like press on the bell icon, and that's it.